In continuation of last class, today topic is Rutherford experiment. Rutherford's experiment. Discovery of nucleus. Rutherford discovery of nucleus. Rutherford discovered the nucleus. After the discovery of electron, proton and neutron, it becomes clear that an atom is made up of three subatomic particles. So, in time of Rutherford, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई एंड हाउ टू अरेंज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द एटम. तो रदरफोर्ड परफॉर्म ए एक्सपेरिमेंट were then carried out to find out how electron, proton and neutron were arranged in an atom. It was Rutherford alpha particle scattering experiment. Rutherford performed alpha particle scattering experiment. Alpha particle क्या थे? Alpha particle is a positively charged particle having two unit of positive charge and 4 unit of mass के पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल. इट इज़ एक्चुअली हीलियम आयन्स हैं. ये हीलियम्स के आयन हैं और इनमें पॉजिटिव चार्ज है, हैविंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास है. हीलियम के आयन्स हैं. इट इज़ एक्चुअली हीलियम आयन. हीलियम आयन्स है. 2 पॉजिटिव चार्ज के हीलियम्स आयन है और 4 यूनिट मास है. अल्फा पार्टिकल आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम, पोलियम. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं ऐसे हैवी एलिमेंट्स जो हर समय एक रेडिएशन क्रिएट करते रहे. दैट एलिमेंट इज़ नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, पोलोनियम, ये सब हर समय एक रेज निकालते रहते हैं, रेडियो एक्टिव रेज. वो अल्फ़ा पार्टिकल रेज को इमिशन करते हैं. तो जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल हैव ए कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं फास्ट मूविंग हैं, दे हैव some amount of energy. They can penetrate through matter of some extent. Matter penetrate to some extent. So Rutherford experiment, a gold foil is a very thin sheet of gold. Alpha particles are much smaller than the gold atom present in gold foil. They fall the alpha particle beams on a thin gold sheet. रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया अल्फ़ा पार्टिकल की फॉलिंग की, फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल इन अ गोल्ड सीट. उन्होंने थिन गोल्ड सीट ली एंड फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल की उनमें फॉल किया एंड देन फाइंड आउट सम कंक्लूज़न. उन्होंने इस टाइप का किया, जैसे थिन सीट थी तो उन्होंने देखा कि ये इस टाइप से ये
ये इन्होंने देखा ये गोल्ड की शीट है एंड अल्फ़ा पार्टिकल जो पॉजिटिव 2 पॉजिटिव के थे उनको ऐसे इस पे उन्होंने इसकी फॉलिंग की शीट पे। तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल, अब ये सब इनके सेंटर रहे होंगे न्यूक्लियस एटम्स के थे, तो देखा कि कुछ तो ऐसे निकल जा रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल अल्फ़ा पार्टिकल जो स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, लेकिन कुछ को इन्होंने देखा कि ये गया एंड इस टाइप से हो जा रहा है, कुछ का उन्होंने देखा कि गया और ये इसी डायरेक्शन में, इस टाइप से उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की। ये थिन शीट गोल्ड है, ये बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, अ बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, ये सीट है, और ये जो एटम ऑफ गोल्ड फॉयल हैं, ये एटम ऑफ गोल्ड फॉयल हैं, ये सब क्या, ये लाइनिंग से एटम ऑफ गोल्ड फॉयल, एटम ऑफ गोल्ड फॉयल कि उन्होंने लिए, थिन सीट ली गोल्ड फॉयल की, और ये अरेंज है एटम ऑफ गोल्ड फॉयल्स, ये एटम्स ऑफ गोल्ड फॉयल हैं, इनमें अल्फ़ा पार्टिकल्स की फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल फॉल किया एंड देन ऑब्जर्व कि सम अल्फ़ा पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, सम डेविएट एंड सम बाउंस एंड रिटर्न। सो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट Rutherford alpha particle scattering experiment, which lead to discover of a small positively charged nucleus in the atom containing all the proton and neutron। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या प्रूव किया कि सेंटर में ऑल पॉजिटिवली चार्ज, सेंटर हैवी है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, that is known as nucleus. So experiments were then carried out and find out how electron, proton, neutron arrange in an atom. So Rutherford alpha particle scattering experiment, which lead to discovery of a small positively charged nucleus in the atom containing all proton and neutron. Rutherford's alpha particles scattering experiment, which lead to the discovery of a small positively charged nucleus in the atom containing all the proton and neutrons. When fast moving alpha particles are allowed to strike a very thin gold foil in vacuum, it was founded that most of the alpha particle pass straight through the gold foil without any deflection from their original path. According to the Rutherford experiment, when fast moving
alpha particle are allowed to strike a very thin gold foil in vacuum it is found that फर्स्ट पॉइंट था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass straight through the gold foil without any deflection from their original path. First point था most of the alpha particle pass straight through the gold foil without any deflection from their original path. And few alpha particles are deflected through small angles. कुछ तो सीधे चले गए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं एंड few are deflected through large angles. Some are deflected small angle and some are deflected alpha particle rays deflected large angle and some of them deflected small angle and some alpha particle goes to the straight line. And third point था very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil and turn back on their path. So Rutherford explained these observations in the following way. The gold foil is made up of atoms. If the atoms were solid throughout their volume, then every alpha particle striking them should have changed the path and got deflected.
Since most of the alpha particle pass straight through the gold foil without any deflection, it shows that there is a lot of empty space in the atom. So most of alpha particle pass straight through the atom according to Rutherford observation. Rutherford observation. Most of the alpha particles pass straight through the gold foil without any deflection. It shows that there is lot of empty space in the atom. And the observation that some alpha particle deflected through small and some large angle so that there is a center of positive charge in the atom which repel the positively charged alpha particle and deflect them their original path. The center of positive charge in atom is known as nucleus. Second observation का the alpha particle, some alpha particle are deflected through a small and large angle shows that there is a center of, क्योंकि सेम चार्ज होंगे तभी रिपल करेंगे ना, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के हैं तो इसीलिए रिपल हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है. पॉजिटिव चार्ज, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इन द atom which repels the positively charged alpha particles and deflects them from their original path. The center of positive charge, this center
of positive charge is the atom is known as nucleus. So, the scattering of alpha particle by the thin gold foil shows the existence of positively charged nucleus in the atom, and very few of alpha particles turn back on their path. This fact cannot be explained only on the basis of repulsion due to the positive charge of nucleus. The observation that very few alpha particle the very few alpha particle completely rebound on hitting the gold foil shows that the nucleus is very dense and hard, which does not allow the alpha particle to pass through it. Since the nucleus is very dense, practically the whole mass of atom is centered at its nucleus. As the number of alpha particles which are deflected is very small, we conclude that the size of nucleus very small as compared to size of atom as whole. In fact, the radius of nucleus the radius of nucleus the radius of nucleus has been found to be about 10 to the power 5 times smaller than the radius of the atom. So, above discussion, we conclude that Rutherford's alpha particle scattering experiment shows the presence of nucleus in the atom. Rutherford's alpha particle scattering experiment
shows the presence of a nucleus in the atom. Also give the some important points about the nucleus of atom. First point है nucleus of an atom is positively charged. पहला point, first point. Second point, nucleus of an atom is very dense and hard. Third point, nucleus of an atom is very small as compared to the size of the atom as a whole. So these 3 points, atom is nucleus of atom positively charged, nucleus of atom very dense and hard, nucleus of atom is very small as compared to the size of atom as whole. So Rutherford discovered the nucleus of atom. Nucleus discovered by the Rutherford. So all of you watch video and after that some point about the Rutherford model of the atom. Now next point, Rutherford's model of the atom. Rutherford model of the atom. First point है an atom consists of a positively charged, dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons. Almost the entire mass of atom is concentrated in the nucleus. Entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. Second point था the nucleus is
surrounded by negatively charged electron. The electron are revolving round the nucleus in circular path at very high speed. The circular paths of the electrons are called orbit. Number 3 points. The electrostatics attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electrons hold the atom together. And number 4 point, an atom is electrically neutral. This is because the number of protons and electrons in an atom is equal नंबर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा एटम. एंड नंबर 5 पॉइंट, मोस्ट स्पेस of the atom is empty space. So this is the Rutherford model of an atom. According to that main point, an atom consists of positively charged, dense and very small nucleus containing all the proton and neutrons. Almost the entire mass of atom concentrated in the nucleus. Second point, the nucleus is surrounded by negatively charged electron. The electrons are revolving round the nucleus in circular path at very high speed. The circular path of electrons are known as
orbits. Third point, the electrostatic attraction between positively charged nucleus and negatively charged electrons hold together the atom. And last point, the atom is electrically neutral. This is because the number of proton and electron in an atom is equal. And number 5 point, the most of atom is empty mass space. So you clear the structure of atom on basis of Rutherford model of atom. So Rutherford model, according to the Rutherford model, these 5 main point कि न्यूक्लियस जो होगा वो सेंटर में होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होगा, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे एट वेरी हाई स्पीड, एंड जो पॉजिटिव चार्ज होंगे प्रोटॉन के और जो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा एटम एंड मोस्ट ऑफ स्पेस एम्प्टी होगा. ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड ने. अब ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे ये पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए थे. सो ऑल ऑफ यू वॉच द वीडियो केयरफुली and clear your concept and write down the Rutherford model in your chemistry copy. If you have any confusion, please send your message in a class group.